Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In our previous video, we have discussed comparison operators on string. Now today, we will continue with some other examples of Python comparison operators on string of different length. Here, some examples are given and we discussed these examples one by one. Here in first example, first string is ABCD equals to comparison operator है ये and second string is ABC. You can see here both the strings are of different length. ABCD is a string of length 4 and ABC is a string of length 3. When we apply the equal comparison operators on string of different length, it will always give the result as false. We have no need to check the ordinal values of corresponding characters because here ABC, these first three characters are same as ABC first three characters. Here D is a character at index 3, but here is no character at the index of 3. So for equality, there is no need to check the ordinal values of the characters and no need to check the string character by character. We can directly say it always give the result false when we apply the equality comparison operator on the string of different length. Next one is, here the first string is ABCD. It is of length 4, not equals to operator, and second string is ABC and it is length is 3, and not equals to operator will always give the result as true when we apply this not equals to operator on the string of different length, because ABC is same as ABC and here is extra one character D and here is no character, so D can't compare with anyone. So both the string are not equals when we apply this comparison operator, this not equals to comparison operator on the string of different lengths. So this not equals to operator always give the result as true. We have no need to check these two string, the given two string one by one character. Next one is ABC. First string is ABC. It's of length 3 and next one is ABCD and its length is 4. Now we have to check one by one character. At the index 0, here is A in lower case and at the index 0, here is capital letter A, A in upper case. अब देखना है कि स्मॉल ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 97 होती है और कैपिटल ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो होती है 65. तो 97 इज लेस देन इक्वल्स टू 65. नो, 97 तो ग्रेटर होता है ना 65 से, तो इट इज फॉल्स. सो वी हैव टू स्टॉप हियर. ठीक है, हमें यहीं पे स्टॉप करना है. वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर कैरेक्टर्स B and B, C and C and so on. We have no need to check because the comparison operator, when we use the comparison operator, तो कंडीशन जो है वो हर एक कैरेक्टर के लिए ट्रू होनी चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, यदि आप इस कैरेक्टर को ले रहे हैं एट द इंडेक्स 0 तो आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा द कैरेक्टर्स एट द इंडेक्स 0. कैरेक्टर जो है ये B at index 1, it is compared with the character capital B at index 1 and next rest of the characters. ठीक है, तो जब कंडीशन आपकी ट्रू, कब ये रिजल्ट कब ट्रू देगा, जब ये कंडीशन सभी कैरेक्टर्स के लिए, when the condition is true for all the characters present in the given strings. But here at the very first character, small is less than uppercase A. Here this condition is false, so it will give the result as false.
Next one is ABCD. First string is ABCD, it is of length 4, and next one is ABC, it is of length 3, and both the strings are of different length. Here E capital E, yes, यहाँ भी अपर केस में E है, and both having the ordinal value 65, same है. Next one is upper case B, here is also upper case B, and both having the ordinal value 66. नेक्स्ट वन इज कैपिटल सी है और यहाँ भी है कैपिटल सी, बोथ आर हैविंग द ऑर्डिनल वैल्यू 67, बट एट द इंडेक्स 3 हियर इज डी हैविंग द ऑर्डिनल वैल्यू 65 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 68, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है, एबीसी में यहाँ आपके पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है. दिस स्ट्रिंग हैज द हैविंग higher ordinal value as compared to the second string ABC. So this condition is true. ABCD will give ABCD greater than ABC will give the result as true. Now let's do practically. First one is I am taking a string hello world. Here I give space between the word hello and world equals to operator hello world. Here first string is hello world and there is a space between hello and world, and here is another string hello world but there is no space between hello and world, and the first string is of length 11 and second string is of length 10 because इसमें जो 1 काउंट हो रहा है एक्स्ट्रा वो किसका है, स्पेस के लिए, वाइट स्पेस के लिए, ठीक है. तो फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 11 है और सेकंड स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है 10 है. इक्वल्स टू ऑपरेटर जो हम अप्लाई करते हैं बोथ द स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ, इट विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट एज फॉल्स. क्लियर, फॉल्स. ये आपको वैसे चेक करनी है ऑर्डिनल वैल्यूज के थ्रू तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं. देखो हेलो है फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हेलो, ऑल these 5 characters are in lower keys, and here in the second string first 5 characters are hello HELLO and all these 5 characters are also in lower keys. अब next character जो है इसमें 5th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है यहाँ पे कितना है वाइट स्पेस है और यहाँ पे कितना है W है इन लोअर केस, ठीक है. तो ऑर्डिनल वैल्यू जो होती है आपकी स्पेस की वो कितनी होती है 32, ठीक है. ऑर्डिनल वैल्यू जो स्पेस की होती है वो कितनी होती है 32. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट लेता है ओनली स्ट्रिंग विद सिंगल कैरेक्टर, ठीक है. सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग. ओआरडी फंक्शन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है विच रिटर्न द ऑर्डिनल वैल्यू एंड इट टेक्स ओनली अ स्ट्रिंग विद सिंगल कैरेक्टर. यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है तो इट विल गिव द एरर. इसने क्या दिया टाइप एरर. टाइप एरर क्या है, ओआरडी एक्सपेक्टेड अ कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 फाउंड. क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वी कैन चेक बाय यूजिंग द len इनबिल्ट फंक्शन. तो लेंथ जो है एम्प्टी स्ट्रिंग की वो कितनी होती है 0, बट जो ओआरडी फंक्शन है वो क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है एक कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर ओनली, ठीक है. तो ओआरडी एम्प्टी स्पेस की जो आपकी ऑर्डिनल वैल्यू है वो 32 है और ऑर्डिनल वैल्यू जो W की होती है वो आप क्या करेंगे, स्मॉल ए की 97 होती है और W होता है आपका इंडेक्स 23 पे. तो 97 प्लस 22 करेंगे आप, कितना आ जाएगा 119. ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ W कितनी आ जाएगी 119. तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स तो दोनों मैच होगी, दोनों की वैल्यू सेम है. नेक्स्ट जो हम देखते हैं 5th इंडेक्स पे, यहाँ पे जो वाइट स्पेस है उसकी वैल्यू कितनी है 32 और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई, W की ऑर्डिनल वैल्यू 119 एंड बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, तो इट विल गिव द रिजल्ट एज फॉल्स. नेक्स्ट वन इज next I am taking ABC less than equals to A, B, C and D.
Both the string are of different length. First string is of length 3 and second one is length of 4. स्मॉल ए कितना है, ऑर्डिनल वैल्यू 97 है, यहाँ पे इंडेक्स 0 पे क्या है, अपर केस ए है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 65. 97 इज लेस देन इक्वल टू 65, नो 97 तो ग्रेटर होता है 65 से, इट विल गिव द फॉल्स एंड हियर इज नो नीड टू चेक फर्दर कैरेक्टर्स बी बी एंड सी एंड सो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए बी सी डी equals to ABC. Here its length is ABCD and its length is 4, and this string is ABC and its length is 3, and both the strings are of different length. And ABC, these three characters, and ABC, these three characters are same, and these three characters are in lower case, and these characters are having the same ordinal values. And here is D character, small d, which is having the ordinal value 100, but there is no character in the second string. So this string, overall this string has the higher ordinal values as compared to the second string. So the condition is true, greater than equals to, and the result will be. If you like my video, then like, comments and share my video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and press bell icon to get latest updates.